मिलेंगे, गले में दिक्कत होगी और ब्रीदिंग में डिप्सनिया उनको पेशेंट को मिलेगा। यहाँ पर इंस्पेक्शन में कोई किसी चेंजेस जो है ये नहीं मिलेंगे। पाल्पेशन में कोई स्पेसिफिक ऑल्ट्रेशन नहीं मिलेंगे। ऑस्कल्टेशन में ब्रीदिंग चेंजेस मिलेंगे। ये क्रैकल्स भी मिल सकते हैं या वीजिंग और रोंकाई भी हमें मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्लिनिकल चेंजेस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जो कि हमारे पास काफी हद तक आते हैं और ऐसे पेशेंट को हम अच्छी तरह से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो उनको प्रोडक्टिव कफ होगा, थोड़ा खांसेंगे और कफ आएगा और उसके बाद पेशेंट को रिलीफ होगा। ये साल में तीन एक महीने उनको ये रहेगा और हर एक दो साल में ये उनको प्रॉब्लम होगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, पेशेंट जो है वो म्यूकस सीक्रीट हो रहा है, इस प्रकार की कंप्लेन करेगा। और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पर चेस्ट के शेप में चेंज मिलेगा हमको। जब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, टीवीएफ करेंगे, टीवीआर करेंगे, तब उनमें जो है ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ एक जगह पर कफ अपूर्णता है, कफ भरा हुआ है और कफ एक कुछ एक जगह पर क्लियर ब्रोंकस है। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेसिकुलर मार्जिन्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे और एम्फाइजिमा के चेंजेस अगर मिलते हैं तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि भाई पेशेंट को दमा का प्रॉब्लम था। एम्पाइमा का, सॉरी, हिस्ट्री जो है ये डिस्निया की होगी, साइनोसिस उसमें मिल सकता है, बैरल शेप चीज होगी, पेरिफेरल इडीमा ऐसे पेशेंट में मिलेगा। और डायग्नोसिस के लिए डिफ्यूजन कैपेसिटी और रिड्यूस एफपीवी, इससे हम कंफर्म करेंगे कि भाई पेशेंट को काफी लंबे समय से ब्रोंकाइटिस है। उसी प्रकार से क्लिनिकल साइन ऐसे रहती है कि जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम काफी लंबे समय से, कर्निक एस्थमस का जो एरिया होता है, जो कि स्टर्नम बॉडी चेस्ट पर सबसे प्रोमिनेंट जो जॉइंट है बोन का, वो फूला अगर है तो हम उसको समझ सकते हैं कि पेशेंट को 5 साल मिनिमम 5 साल से उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। ये इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जो स्ट्रक्चर है, ब्रोंकियल स्ट्रक्चर है, वहां पर इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर स्पाज्म होगा, रिलीव हो जाएगा, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। पर यही अगर काफी लंबे समय से है, 2-3 साल से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्लाइट वीजिंग, पेशेंट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो भी उनमें हमको देखने को मिल सकती है, या फिर क्रैकल्स या फिर राल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो एयरवे होता है वो कंप्लीटली जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं ना होने के कारण पेशेंट में ये प्रॉब्लम हमको दिखता है। तो ये चेंजेस हमको गाइड करते हैं कि भाई पेशेंट में एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है। अब मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, आयुर्वेद की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बल्ले और ब्रूहण की चिकित्सा हमें करनी ही पड़ेगी। दमा एक ऐसा रोग है जहां पर इम्यूनिटी को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, होस्ट में सिस्टम को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, होम्योस्टेसिस हमें जो है ये मेंटेन करनी पड़ेगी, अच्छी रखनी पड़ेगी, जिसे आजकल की भाषा में इम्यूनिटी बूस्टर, क्वालिटी लाइफ मैनेजमेंट हम कहते हैं। तो कर्षण जो है वो वेट लॉस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। खास करके जो लंग टिश्यू है उसकी जो है ये वाइटल कैपेसिटी किसी भी हालत में घटनी नहीं चाहिए। वेट घट रहा है या फिर एफपीवी घट रही, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि पेशेंट को सिम्टम रिलीफ होने के बाद भी डिजीज इंटरनली जो है ये हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें हमें कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी कि जो थोड़े मात्रा में बल्ले या फिर ब्रूहण या फिर रसायन है। सर्वेषां ब्रूहणे अल्पः शक्यश्च प्रायश्च भवेत्, नत्यर्थम शमने पायो पुरुष अशक्यश्च करने कर्षण, कर्षण किसी भी हालत में, धातु का क्षय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिप्लीशन, वेट लॉस तो बिल्कुल जो है ये नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट while dealing with the chronic bronchitis, but if it is associated with acute and chronic bronchitis, तो यहाँ पर हमें जो है ये ऐसे मेडिसिन को यूज करना पड़ेगा कि जो थोड़ी वात शमन हो, जो ब्रोंकोस्पाज्म को कम करती हो, साथ में थोड़ी कफ को शामक करती हो, जो प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, जो एक्यूमुलेटेड कफ प्लक्स है उसको निकाल सके, उसी प्रकार से जो कफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सके। तो चिकित्सा सूत्र में क्या 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 प्रोटोकॉल हमारा रहेगा, तो यत्किंचित कफवाताग्नम उष्णम वातानुलोमनम। तो यहाँ पर हमें जो है ये ब्रोंकोस्पाज्म कम हो, प्लस जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ना हो, उस हिसाब से हमें
मैनेजमेंट करनी। अब मान लीजिए कि एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आ रहा है, तो हमें एयरवे जो है वो पेटेंट रखना पड़ेगा, और उसके लिए हम एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि छाती और पीठ पर अच्छी तरह से नमक मिला हुआ तेल या फिर सेंधव तेल का मालिश करके पेशेंट में हम थोड़ा-सा सिकाई करें। जिसे अगर संस्कृत भाषा में और रेफरेंस के साथ कहें, तो ये कहेंगे कि आक्तं लवणतेलेन नाड़ी प्रस्तरशंकरैः तय्येव ग्रथितश्लेष्मा श्रोतेषु विधीयते। और जब हम ये करते हैं, जब दिस प्रोसीजर वी डू, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये काफ़ी लंबे समय तक उसमें आराम मिलता है। ब्रोंकोस्पाज़म, जो कन्वेंशनल ब्रोंकोस्पाज़म हम यूज़ करते हैं, तो ब्रोंकोस्पाज़म में इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। ऑनसेट ऑफ जो रिलीफ है, ये काफ़ी जल्दी होती है, पर उसी के साथ-साथ ब्रोंकोस्पाज़म फिर से डेवलप होता है। पर यहाँ पर अगर हमने कफ को निकाल दिया, कफ प्लग्स को निकाल दिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को हमने रिमूव कर दिया, तो काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को हम लाभ दे सकते हैं। भले उसका ऑनसेट जो है ये थोड़ा डिले हो, ये आधा घंटे के बाद अगर ऑनसेट हो, पर 24 घंटे को अगर लाभ मिल रहा है, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। अब एक्यूट मैनेजमेंट है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उनमें उनके जो सिम्पटम्स हैं, उनमें कौन-कौन से सिम्पटम को हम अटेंड करेंगे, तो उसको बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को मैनेज करने के लिए सिकाई करना है, छाती और पीठ पर मसाज करना है, कार्डियक बेड पोजीशन देना है। हम जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उसमें सोमलता है, टंकण है, यष्टिमधु है, कनकासव है, सोमासव है, हेमगर्भ पोटली, अभ्रगर्भ पोटली का हम यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से जिनके पेशेंट में कफ को निकालना है, उसमें एक्सपेक्टोरेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टंकण है, यष्टिमधु है, या फिर लवणोदक से वमन हम करवाते हैं। पानी, नमक वाला पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पी करके पूरा जो है ये गले तक आ जाए, और ये थोड़ा हाथ से गले के ऊपर के भाग में हम छुएँ, तो एक प्रकार का सेंसेशन, वॉमिटिंग का सेंसेशन होगा, कफ निकल जाएगा, तो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगी। जनरल प्रोटोकॉल क्या रहेगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कि फास्टिंग एटलीस्ट फॉर 1 मील टाइम टू 1 डे, अवॉइड कोल्ड एक्सपोज़र और विंड एक्सपोज़र को कंप्लीटली अवॉइड करना, पंखे के नीचे बैठना उसको अवॉइड करना, पंखा ऊपर चल रहा हो उस प्रकार से नहीं, पंखा का सीधा ब्लो आ रहा हो उस प्रकार से बैठना नहीं, एसी को अवॉइड करना, वार्म लिक्विड्स को लेना, और अपने आप को अच्छी तरह से कवर करना। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें जो 2 अटैक है उनके गैप को बढ़ाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरा कि जब अटैक हो रहे हैं, स्पाज़म आएगा, पैरोक्सिस्मल अटैक है, तो ये प्रॉब्लम होगा, सीजन में वेरिएशन होगा, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, डायटेटिक वेरिएशन होंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये पीरियड मिनिमम हो और उस पीरियड में पेशेंट को जल्दी लाभ मिल सके, उस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट क्रोनिक फेज में हमें देनी पड़ेगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको मैनेज करना, इसके लिए किरातिक्त है, त्रिभुवन कीर्ति है, दशमूल है, इसका हम यूज कर सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल होम्योस्टेसिस, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें करना है, तो उसके लिए हम क्या मेडिसिन देंगे कि भाई शीतोपलादी, तालिसादी, वासा, अश्वगंधा, श्वास का चिंतामणि, श्वास कुठारस, और यहाँ पर हम विरेचन का यूज कर सकते हैं। विरेचन हम जो है ये थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कफ जो है ये निकलता जाए, मल निकलता जाए, उसके लिए आरगवद का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं एरंड का, या फिर हम यूज कर सकते हैं अ, या फिर हम यूज कर सकते हैं आरोग्यवर्धिनी का, कि जिससे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कफ जो है ये निकलता जाए, ताकि पेशेंट में कफ का कंजेशन जो है ये ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण और समय के अभाव में मैंने अपना प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक सीमित और संक्षेप में मैंने करने का प्रयत्न किया। आभार अस्तु। बहुत बहुत आभार। ये वाली सेटिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ओवर टू बड़ा पवन जी शानदार। सर। आपको हमारी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल सर? Yes, हरिओम जी। audible. यस सर, यस सर, अच्छा ठीक, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है सर। मैं अब सनातन महाकुर जी को सदर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सनातन महाकुर फ्रॉम योगा। Namaste everyone. Today we are celebrating World Asthma Day. Generally, every year in the month of June,
first Tuesday is celebrated as Asthma Day. It is a psychosomatic disease, but it has many causes and many symptoms. Generally, asthma, that word, it is derived from the ancient Greek word, which means panting or short down breath. This is the meaning of asthma as per the Greek word. But when you will see about the causes, it starts with the hereditary. If parents are asthmatic, chances are that their children may have the asthma. And some other causes like stress and wrong lifestyle, those who are leading in the industrial areas, dusty areas, smoky areas, chances are there to get the asthma. And those who get cough, cold, running nose, sinusitis, very often running nose, it is common to them. They may have asthma in long run. But symptom-wise, it shows with short breath. While they are talking, they feel problem in the voice, and while they are climbing the stairs, when they're running for short distance, they start feeling problem with their breathing. So these are the different causes and symptoms of asthma. But if we see from the point of scripture, there are pancha pranas, because prana means the breathing or life force. It is closely related to asthma. A asthma patient struggles to survive in each moment when he or she gets attacked. That pancha prana, which is in our body, it has different role. Like for our indriyas, for the organs of like eyes, ear, nose, tongue, these are governed by our prana. And apana and udana, they are managed with our upward movements and downward movements. And samana is situated in our navel part, navel region. It is governed in the middle part. And dana is responsible for the whole body in the way of circulation. So when a person gets asthmatic, we can easily say his upward movements of the prana is disturbed. So to settle down that prana which is disturbed, we have to see the causes, why that person is suffering and how long he or she is suffering and what are the causes. Here in parameter, we see the peak flow rate, PFR, to measure the breathing capacity, how long a person can blow the air. After measuring peak flow rate, we can see the condition of a patient. But directly, I'll come to yoga. When we talk about yoga, yoga not only helps with the asanas, it starts with breathing practices like hands in and out breathing, this one, and hand stretch breathing, stretching the hands in front of our chest, in front of our forehead, above our head, and ankle stretch, standing on the toes, stretching the hands above the head. These three are very effective to expand the lungs. Along with that, in sitting posture, three breathing practices are there, like Sasankasana, the rabbit pose, and dog breathing, Svanasana breathing, and Vajrasana or tiger breathing. So three standing and three sitting. These breathing practices are very useful for a patient, those who are suffering, for the patient, those who are suffering from asthma or breathing problem. But along with that,
there is a technique called yogic chair breathing. During the asthma attack, when a person strives himself or herself to breathe properly, to breathe out properly, that time yogic chair breathing can be given. So patient is advised to sit with the stretched leg and hands should be crossed like this, and by keeping a chair in front of the patient or stool, and with that patient may take rest, and sometimes patient is advised to do the neck exercise to open up the respiratory tract. And there are some standing exercises with breathing or with chanting of U, Ma can be done with slow movements, because during attack, patient will have less energy to do any kind of exercise. But this yogic chair breathing will help to normalize the attack. And like my previous speaker was saying, we have to try to increase the distance between two attacks. So this is the technique which will help to reduce the attack and to increase the gap between two attacks. And along with yogic chair breathing, if you see the person, the patient is young, he can start with Surya Namaskar, slow movements, along with other asanas like Bhujangasana, Salavasana, Padautanasana, Paschimottanasana, Sarvangasana, Matsyasana, Trikonasana, Ustrasana, and Ardha Ustrasana, Ardha Chakrasana, Parsvakonasana. These exercises are very useful for the asthma patients. But when we look within to detoxify the body, to remove the mucus from the body, the patient should have some kriyas like Kapalbhati, the fast breathing by flapping the abdomen. That will help to strengthen the lungs capacity. And second thing is, it will help to overcome from the stress by strengthening the lungs and by purifying the respiratory tract. And other kriyas like Jalaneti, which helps to cleanse out the upper nasal part from tip of the nose to middle part, Jalaneti. And Sutraneti helps to cleanse from the nose to throat. And Vamandhoti, which helps to clean the upper part of the body. And other kriyas like Dandadhoti, Vastradhoti also advised as per the patient's condition and age group. But in naturopathy, there is a technique called enema, and that also a variation in yoga. It is called Sankha Pasyalana or Laghu Sankha Pasyalana. That also helps to purify the whole system, like from mouth to till anus. Total digestive system is cleared with that kriya, which helps to detoxify the whole system. And after that, strongly advisable that Savasana or relaxation is must. And patients should take care of the diet, like ice cream, all the items which was preserved in the fridge, they should avoid, and they should avoid excess use of air conditioner, fan, and they should avoid the movements in cold season. And in the positive way, they can take the warm water, they can sip, and excess use of coffee and tea should be avoided, but they can take warm water, cup of warm water with little bit gap. So that will help to give instant relief from the cough and cold and narrowness of the respiratory tract. But in pranayam, as I discussed about the prana, imbalance of the prana, Nadi Shuddhi pranayam or Anuloma Viloma pranayam, which will help
to bring balance between sympathetic and parasympathetic nervous system. In yoga, we say Chandra Nadi and Surya Nadi. By bringing balance, it will help to settle down the prana. So it will help to reduce the frequency of attack, particularly when a person suffers with running nose, cough, cold. He can practice Surya Nuloma Viloma, that right nostril breathing. It has a warm effect. So instead of Anuloma Viloma, if person practice intentionally Surya Anuloma Viloma or right nostril breathing, it gives good effect in asthma. And after doing Kapalbhati, right nostril breathing, then Anuloma Viloma is advisable. Once the patient's attack is settled, a patient can go for the Bhastrika or Ujjayi Pranayam, which is most useful for the respiratory tract. And as Sanil Mama was saying, meditation. Yes, because asthma patients, they struggle to survive and they have a lot of problem at the mental level. They face so many irritations. So sometimes they prefer the other options like taking allopathy, Ayurveda, homeopathy, so many things. But this meditation also helps to calm down their mind and relax their body. By doing Surya Namaskar, asanas, kriyas, pranayam, and along with proper diet, if a person can strengthen the immunity, strengthen the breathing pattern, then there is no doubt he or she can manage the asthma. And if it is in the beginning stage, it is 100% advisable. It will be helpful to reverse, means to prevent from the other side effects like heart problem and other things. And main thing is they should check their lifestyle, in which environment they survive and what is their food pattern, what is their thought process. And particularly in the research, we see peak flow rate, PFR, and breathe rate, and pulse rate. So these are the parameters we take for the asthma. And I'll point out 3 research papers published by ASTHMA University. First one was the effect of yoga therapy in bronchial asthma. It was by Vivekananda Kendra Yoga Anusandhan Sansthan, Bangalore. They published this journal in British Medical Journal, and when it got published, BBC was announced that there is a hope in asthma to overcome the attacks and to manage the asthma by yoga. So it was the announcement by BBC after the journal published this article. And after that, there are many articles published on yoga, study of the effect of Bamandoti in bronchial asthma patients done by Dr. Bhagwan Bhuya from the same institute. And there was another paper titled Reduction in Exercise Induced Bronchial Asthma in Asthmatic Following the Yoga Asanas. It has done by Ayurveda doctor, Dr. Sudha Rani, and co-guided by Dr. R. Nagaratna, Dr. H.R. Nagendra, and Dr. Shirley Tales. So these are the some research papers on asthma. But in conclusion, I'll say main thing is patient's strong willpower. If a patient is strong and if he is aware about his life pattern, food style, and regular exercise of asanas, pranayam, meditation, and relaxation, he or she can manage herself from the dread attack of asthma. So thank you all. With this, I'll conclude my speech on the World Asthma Day. Hope this will give some information to the people those are suffering from asthma. Thank you, organizers. Namaste. Subharatri. Thank you.
थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद सर से प्रार्थना करता हूँ कि concluding remarks की। Respected विष्णु प्रसाद शर्मा। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। आज का आयुष समृद्धि इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज on asthma care by Ayush. All the expert has delivered their lecture very nicely. First of all, I want to offer my sincere thanks to my student, Dr. Rigam Pegu, Medical Officer of Assam, Guwahati, for his excellent work and excellent deliberation on topic. Thank you, Rigam Pegu, for excellent presentation. Next, I want to offer my sincere thanks to Professor Dr. Nishan Shukla. Sir को क्या बोलेगा? Sir तो बहुत अच्छा explanation, management, protocol, everything बहुत बढ़िया से explain किया है. Thank you. Namaskar, sir. Next, I want to offers thanks to Dr. Suparna S. Mukherjee for her excellent presentation. Next, I want to offer my sincere thanks to Sanatan Mahaput from Kolkata. Sir, thank you very much for your excellent presentation. You have explained what type of yoga, what type of posture effective for bronchial asthma. You have explained this thing very nicely. So once again, thank you very much for your excellent presentation. Once again, I offer my thanks to all the eminent speaker, distinguished guests, and especially Professor Pavan Sharma for organizing such a wonderful seminar on asthma care by Ayush. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you. Good night to all, sir. Good night. Good night to all.